Dear students, in this topic we shall discuss the non-tropic hormones of adenohypophysis. Adenohypophysis secretes three hormones that act directly on their target tissues. These include melanocyte stimulating hormone MSH, prolactin ERL, and growth hormone GH. It is also called as somatotrophin. The melanocyte stimulating hormone or MSH is a peptide hormone. In lower vertebrates, large amounts of MSH are produced from the intermediate lobe of pituitary. In humans, MSH is produced from pars intermedia of anterior pituitary in extremely low quantities. The MSH regulates the activity of pigment-containing cells, that is melanocytes. That is why its name is melanocyte stimulating hormone. These melanocytes are found in the skin of many vertebrates. This hormone stimulates the synthesis of black pigment melanin by melanocytes. In these melanocytes, not only this is synthesized, but its dispersion is also controlled by MSH within the melanocyte. Melanocyte के अंदर अगर ये डिस्पर्स हो जाता है तो स्किन का कलर ब्लैक हो जाता है, और अगर इसको कंसंट्रेट कर दिया जाए तो स्किन का कलर लाइट हो जाता है. दैट इज वाई कि ये मेलानोसाइट के ऊपर इफेक्ट करता है. So this leads to darkening and lightening of the skin color. Melanocyte stimulating hormone humans में तो इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए स्किन की पिगमेंटेशन ह्यूमंस में ज्यादातर ACTH एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन कंट्रोल करता है. MSH मेलानोसाइट्स को कंट्रोल करने के अलावा भी कुछ रोल्स प्ले करता है. फॉर एग्जांपल मैमल्स में हंगर को भी इफेक्ट करता है, भूख लगने के अमल को इनहिबिट करता है बाय एक्टिंग ऑन सम न्यूरॉन्स इन द ब्रेन. इसके अलावा इट इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन फैट मेटाबॉलिज्म. प्रोलैक्टिन. Prolactin has diverse effects in different vertebrates. In birds, it regulates fat metabolism and reproduction. In amphibians, it delays the process of metamorphosis. In freshwater fishes, it regulates salt and water concentration. While in mammals, it stimulates mammary gland growth and milk production. Dear students, now we shall discuss growth hormone in detail. The growth hormone is also known as somatotropin and somatotropic hormone. It is a protein that contains 191 amino acids in a single chain. The production and release of growth hormone is under the control of two hypothalamic hormones. One is the growth hormone releasing hormone, that is GHRH, and the other is the somatostatin, that is growth hormone inhibiting hormone GIH. The growth hormone exerts both metabolic and developmental effects. First, we shall discuss the metabolic effects of growth hormone. Growth hormone induces mobilization of stored fat for energy metabolism.
It stimulates fatty acid uptake by the muscles. It also decreases the rate of glucose utilization. As a result, it causes elevation of glucose in blood. Growth hormone also increases the rate of protein synthesis in most cells of the body. It also stimulates insulin secretion. इंसुलिन की सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन की वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से होती है. डायरेक्टली इस तरह से कि ये बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज पर डायरेक्टली एक्ट करता है और उन्हें स्टिमुलेट करता है इंसुलिन सिक्रीशन के लिए. ये वो वाहिद ट्रॉपिक इफेक्ट है ग्रोथ हार्मोन का. अदरवाइज इसके बाकी तमाम इफेक्ट्स नॉन ट्रॉपिक हैं, बट दिस इज द ट्रॉपिक इफेक्ट. इनडायरेक्टली ये इंसुलिन की सिक्रीशन को इस तरह से इंक्रीज करता है कि ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स को हाई करता है. जब ग्लूकोज लेवल ब्लड में हाई होंगे तो इंसुलिन प्रोड्यूस होती है. ओवरऑल अगर हम देखें तो ग्रोथ हार्मोन एनहांसेस बॉडी प्रोटीन्स, इट यूजेस अप फैट स्टोर्स एंड कंजर्व्स carbohydrates. Now we shall discuss the developmental effects of growth hormone. It causes growth of almost all tissues of the body. It stimulates RNA and protein synthesis and promotes the growth of tissues, particularly cartilage and bone growth. The growth of tissues due to growth hormone is because of cell division, that is proliferation, increase in the number of cells. ग्रोथ करने के दो तरीके होते हैं, एक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स और दूसरा इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स. ये इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स को प्रोमोट करता है. ग्रोथ हार्मोन वर्क्स सिनर्जिस्टिकली विद thyroid hormones and promotes tissue growth during development. Growth hormone also stimulates liver to produce growth promoting factors. For example, insulin like growth factor जिसे IGFs कहते हैं. ये जो IGFs हैं इनको सोमैटोमेडिन्स भी कहते हैं. They act directly on cells to promote growth. तो ग्रोथ हार्मोन ऐसे फैक्टर्स को भी प्रोड्यूस करवाता है. Dear students, growth hormone is very important in the developmental processes of animals and humans. Its undersecretion or oversecretion has drastic effects which lead to abnormal growth and development of the body. तीन इस तरह की मेजर ह्यूमन सिम्टम्स हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन की के लेवल की डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं. उसमें से पहला जाइगेंटिज्म है, बहुत बड़ा कद होना, एक्सेसिव साइज, एक्सेसिव स्टेचर. अगर ग्रोथ हार्मोन प्यूबर्टी से पहले चाइल्डहुड में ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो जाए तो बहुत ज्यादा कद में इजाफा हो जाता है. इस हालत को जाइगेंटिज्म कहते हैं. दूसरा जो ह्यूमन सिम्टम है दैट इज एक्रोमेगली. एक्रोमेगली में अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज्यादा हो आफ्टर प्यूबर्टी तो उसके नतीजे में हेड की बोन्स और एक्सट्रीमिटीज की बोन्स ज्यादा लंबी हो जाती हैं और इस हालत को एक्रोमेगली कहते हैं. अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन चाइल्डहुड के दौरान प्यूबर्टी से पहले जो डेवलपमेंट की एज है उसमें कम हो तो फिर ड्वार्फिज्म प्रोड्यूस होता है जिसमें स्टेचर शॉर्ट रह जाता है. हम इसे कॉमन लैंग्वेज में बोनापन कहते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन.